Hello student, this is part 1 of chapter 14 statistics class 9. In this chapter we will discuss what is statistics and where we are using the word statistics in our daily life. Okay, and how we can solve the question related to statistics. So now, first of all, what is statistics? Statistics is the branch of study that deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of data. What it means? इसका क्या मतलब है? स्टैटिस्टिक्स स्टडी की वो ब्रांच है जिसके अंदर किससे डील किया जाता है? डील्स विद द कलेक्शन, मीन्स किसी डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, फिर उसको प्रेजेंट कैसे करना है, फिर उसको एनालाइज करना है कि वो ठीक है या नहीं, फिर उसको इंटरप्रेट करना है. दैट ऑल थिंग्स डील्स विद द स्टैटिस्टिक्स. ओके, नाउ data is facts or figure collected with the definite purpose that are called data. means जो figures या जो data, जो रॉ मटेरियल हम इकट्ठा करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए किसी डेफिनेट पर्पस से, दैट इज डाटा. नाउ व्हाट इज प्राइमरी डाटा? डाटा इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. सो नाउ फर्स्ट इज प्राइमरी डाटा. When the information was collected by an investigator herself or himself with the definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data. What it means कि जब information को collect किया जाता है किसके द्वारा? investigator. investigator means जो investigation करता है. ओके, किस चीज़ के लिए? herself or himself means वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. विद द डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हिजर माइंड, मीन्स उसके माइंड में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है कि मैंने इस चीज़ के डाटा कलेक्ट करना है. लाइक आई सेड नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, कि जैसे मैंने डाटा कलेक्ट करना है कि स्कूल में कितने फैंस हैं. ओके, तो मेरे माइंड में एक ऑब्जेक्टिव चल रहा है कि मुझे फैंस का डाटा कलेक्ट करना है. मैं खुद कर रहा हूँ. ओके, आई एम इन्वेस्टिगेटर, सो दिस इज प्राइमरी डाटा. सो व्हाट इज प्राइमरी डाटा? कि इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हर सेल्फ विद द डेफिनेट पर्पस, कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए. ओके, दैट इज प्राइमरी डाटा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी डाटा. सो एग्जाम्पल्स आर लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. मीन्स मैंने कोई डाटा कलेक्ट किया कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं. इन्वेस्टिगेटर मैं खुद हूँ. ठीक है, दैट मीन्स प्राइमरी डाटा. सेकेंड वन, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, मीन्स कि कितने फ़ैन हैं, वो भी क्या हो गया? प्राइमरी डाटा. नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेकेंडरी डाटा. That means when the information was gathered from a source which had already stored the information, yeah, which already had the information stored. Okay, so the data obtained is called secondary data. Means कि information को वहाँ से gather करना या उस source से लेना जहाँ पे information already stored है, that is secondary data. Like election result obtained from television और newspaper. हमने election voting का result देखा television और newspaper पे, उसको collect कर लिया. Means already information stored थी television news reporters के पास और हमने restored information को gather किया, तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया. ओके, लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन्ड एजुकेशन सर्वे थ्रू एजुकेशन सर्वे. मीन्स कि एजुकेशन सर्वे हुआ, उससे हमें लिटरेसी रेट पता लगा कि कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं. ठीक है, तो वो भी डाटा क्या ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से हमने लिया है. सो दैट मीन्स इट इज़ अ सेकेंडरी डाटा. सो दिस इज ऑल अबाउट 14.1. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 14.2. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द blood group of 30 students of class 8th are recorded as A, B, O up to zone B and O. Okay, means 30 student blood group data they have given. Question is represent the data in the form of frequency distribution table. Which is the most common and which is the rarest blood group among the students? So how you can do this for blood group and here number of students, or you can say frequency. Any word you can use here. Yes. What is your blood group? A, B, O, AB, and last is total of this line. It should be 30 because statement they have given 30 students, so it should be 30. So now how many is A are here? Just count it. Count how many A? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Then count B. How many B? 6. Then O. How many is O are here? 12. AB 1 2 and 3. Count this. 12 or 3 15, 15 or 6 21 or 9 30. Total is 30. That means your question is correct. This is your frequency distribution table. This is the figure of frequency distribution table. You can say figure or table, it's up to you. This is frequency distribution table. Now question is which is the common and which is rarest data. So common blood group is common blood group
and rarest blood group. These two things they have told. So common blood group, which is maximum 12. Common thing is O blood group, that is 12. Rarest blood group, which one is? You have to write the blood group, not the student. So blood group is O, and rarest blood group is least value AB. So rarest blood group is AB. So this is your first question. Now the second question, 30 children were asked about the number of hours they watched TV program in the previous week. Means 30 student का डाटा लिया गया है कि वो वीक के अंदर कितने आवर्स टीवी वॉच करते हैं. The result were found as 1 hour, 6 hour, 2 hour, up to 14 hour and 12 hour. Data is of how many students? 30 children. Okay, this is children, so 30 children. Make a group frequency distribution table for the data. Exam they can also ask tabular form or represent your data in tabular form. Both are having the same meaning, tabular form as well as group frequency distribution table. Okay, so no need to confuse, both are same thing if they ask tabular form as well as group frequency distribution table. ठीक है, anything they can ask, depend upon the teacher या examiner who sets your paper. So question is draw a group frequency distribution table. So they said taking class with 5 and one of the class interval is 5 to 10, means you have taken class intervals whose width is, that means class size is 5. Okay, so how you can take this? May I rub these lines? Because question is clear, you have to draw group frequency distribution table. So just write down here class interval and here frequency, telemark, then frequency. Yes, class 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and 15 to 20, because maximum value is 17 and minimum value is 1. Now draw the tally marks according to that. First value is 1. So this comes in between 0 to 5. First kept one thing in your mind, 0 to 5. What it means कि 0 तो include होगा but 5 include नहीं होगा. कहाँ तक values include होगी? 4.99 तक. और यहाँ पे 5 include होगा, 10 नहीं include होगा. Okay, up to so on as it is. So first value is 6. Mark as here. 1. Put the mark. 6. 6 कहाँ पे आएगा? 5 और 10 के बीच में. 2. 0 to 5 के बीच में. 3. 0 to 5 के बीच में. 5. सेकेंड लाइन में. 12. 10 to 15 के बीच में. 5. सेकेंड लाइन. 8. 5 to 10. 4. फर्स्ट लाइन. 8. हाँ जी, अब देखो जो फिफ्थ लाइन आती है वो हमेशा क्या आती है? टॉप टू बॉटम. उसको आपने बेंडिंग लाइन बनाना है. नाउ 10. वेयर इज योर 10? हेयर. 3. हेयर. 4. हेयर. 12. 2. 8. 15. 15. After that 1. 17. 6. Then 3. 2. 8. 5. 9. 6. 8. 7. 14. 12. So these values are finished now. Check how many are these? 5 and 5, 10. 5 and 10 are 3, 13. These are 5 and this is your 2. Do the total. 10 or 13, 23 or 5, 28 or 2, 30. Your total students are 30, means total children, or you can say total children are 30. So your question is correct. Is it clear what you have to do in this question? Now telemark topic is clear. So keep one thing in your mind, when question is of group frequency distribution table, जब भी question group frequency distribution table आ जाए या tabular marks form आ जाए तो आपको हमेशा tally marks बनाना ही बनाना है. Getting my point? So this figure is your grouped frequency distribution table.
group frequency distribution table. So now difference is clear. What is grouped and what is ungrouped? अनग्रुप में हमें टेलीमार्क की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको टेलीमार्क बनाना ही बनाना पड़ेगा. सो नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक. कि कितने बच्चे हैं जो टेलीविजन को 15 आवर्स या उससे ज़्यादा टाइम के लिए एक हफ्ते में देखते हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रन फॉर 15 to 20? मोर देन 15 मीन्स 2 चिल्ड्रन. सो आंसर इज 2 children. Okay, so this is the answer of second part. So this is all about 14.2. You can do easily all the questions because concept is very easy. You have already done in your previous classes also. Okay, so thank you.